I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हे हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं एसक्यूएल में ट्रिगर क्या होता है। और आज आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, राइट। चलो इसे ही प्रैक्टिकल हम समझने वाले हैं हमारे एसक्यूएल में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने टेबल क्रिएट करा है, एम्प्लॉय आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट है, फर्स्ट नेम एंड टैक्स पेएबल सैलरी। तो इस कॉलम जो टैक्स पेएबल सैलरी, इस कॉलम में वही सैलरी इंसर्ट होंगे जिन पर टैक्स अप्लाई है। एंड यू नो वेरी वेल, न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग, न्यू बजट के अकॉर्डिंग हमें 12 एलपीए पर कोई सैलरी नहीं देना है, ठीक है। तो चलो इस ट्रिगर को हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल में समझते हैं। तो हमें डेटाबेस पर क्लिक करना है, हमारे टेबल पर राइट क्लिक, ऑल्टर टेबल, एंड नीचे यहाँ पर ट्रिगर्स दिख रहे हैं, राइट। बिफोर इंसर्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर फ्यू लाइंस लिखे हुए हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो कंडीशन हमारा क्या होगा, इफ न्यू, ठीक है, न्यू टैक्स पेएबल सैलरी। तो ये हमारा क्या है, कॉलम नेम था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये हमारा कॉलम नेम था, राइट। सो न्यू पेएबल टैक्स सैलरी इज लेस देन, अगर ऐसा होता है 12 लाख से कम होता है, देन व्हाट विल हैपन, it will raise exception, and signal is a keyword to raise exception in SQL. Okay, SQL state this is user defined exception, and it should be 45,000. Okay, this is exception. Okay, I will explain you detail in another class. Okay, all right, and here set a message. Okay, if person tried to insert less than 12 LPA, then what it will show, a message in text. Okay, and it will show that no, hold on, no need to pay tax up to 12 LPA as per new regime. Simple. Okay, cool. And if, and close here, that's it. Okay, and apply here, apply and finish. Okay, and come here, and here let me try to insert less than 12 LPA, then what will happen. Okay, so let me copy it first, wait a minute, and this, okay, and name should be, let's suppose, what, Franklin. Okay, hold on, Franklin, and salary, let's suppose it is mm, okay, and see what will happen. Okay, wait a minute, insert into employees, first name, comma, let me enter comma here, yeah, and yeah, done. And here you can see error code 1644, no need to pay tax up to 12 LPA as per new regime, right. And if I will change it like 12 lakh 10 rupees, okay, then what will happen, what it will show you. Okay, it is like more than 12 LPA and how much, only 10 rupees, then what will happen, then of course you need to pay tax on that. Okay, and here you can see, right.